Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I'm Shashi Dhar, your host, and we are back with our Wednesday session. And the topic for today is in continuation with the series that we have been doing of Sage Patanjali's Yog Sutra. So we are talking of Ashtang Yog, and we are into the 7th limb now. Out of the 8 limbs, we have already covered 6 limbs. So we will do a quick recap of that, and then we move on with the session for today. Yes. So anybody who wants to recap your journey when we started with the first limb of Ashtang Yoga, and we are moving on to the 7th limb now. So anything that you have observed in your progress, want to share something, please go ahead. If you have any questions, you can do that. And then we move on with the session for today. Fast. So who would like to share? Everybody is saying not me. Okay. Yes, Lakshit Bhatia, go ahead. Yes, so one of the examples I really like was about the tortoise, how his breath is controlled and he takes inside his hands and his legs and his mouth as well, so that one is controlled in a pratyahar situation when all the 9 doors of his senses of karamendriya, jnanendriya is being captured, then his vivek and sakshi bhas comes out. So this is a pure sequence of a pratyahar, and this should be done when you have a lot of vivek, and you should know that when your energy is going there and how you should control every aspect of your movement and witness with that view. Perfect. Let's acknowledge Lakshit ji. Very good. And what he's talking of is the 5th limb of Pratyahar. Yeah. Yes. So before that, anybody else who wants to share? And then I will do a quick recap of the 6 steps that we have done so far. Meanwhile, let me welcome Kusum Patel ji, welcome, and Sushil Jain ji, welcome. Yes. Right. Anybody else who wants to share? What are the kind of insights or progress you have made? What is the kind of transformation that is happening in your life based on the 6 limbs that we have already covered? That is what we are looking at. कौन बोलना चाहेंगे? And meanwhile, let me welcome Advocate Kapil Mitra ji, welcome. Yes, I'm not able to see all the windows simultaneously, so I'll keep welcoming the people who are joining in. Yes, और कोई बोलना चाहेंगे? Apurva ji, Nivedita ji, anything you want to share? You have been attending all the sessions, except one, I suppose. Yeah. Which share करना चाहेंगे? What are the kind of benefits that you have got or insights you have got for the benefit of people who have just joined? Yes, sir. Yes. Go ahead. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ नया लेकर ही जाते हैं सर. एंड फ्रॉम दिस पतंजलि जो उनका अष्टांग योग है उसके ऊपर से तो जैसे आप बोले हो क्या मिला है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यम नियम आसन, तो यम नियम आसन वो सारा में सब स्वाध्याय इज वन ऑफ द लिम्ब. तो स्वाध्याय है और अपरिग्रह है. Yes. अपरिग्रह I have started following every Friday, sir. Okay, very good. And absolutely बाहर का कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं. And feeling very happy about it. Very good. बहुत बढ़िया. Yeah. So just एक शुरुआत करी है sir, and that is from आपके guidance के थ्रू ही शुरू किया है sir. Yeah, thank you. Absolutely welcome and wonderful, Nivedita ji. And we have to actually take the baby steps. We should not be looking for a giant step. Take small baby steps every day, and one day you will realize, "Arey, itni dur aa gaye," no? And that is the kind of progress you make in the spiritual journey. Yes, very good. Yes. Let's acknowledge Nivedita ji. Thank you. Okay, so now I will quickly do a recap. So the first limb we say is, first 2 limbs are yam and niyam. I will not go into the details of it, but what it gives a spiritual seeker is the values which are important in our daily lifestyle and which can transform our life and become the foundation for our spiritual growth. So yam and niyam are basically, you can say,
theory, yes, theory, but then it gives you a experience of what can be possible in your life. वो अभी तक अप्लाई किया नहीं है, अभी हमको सिर्फ थ्योरी मालूम है उसका कि ये करने से ये होगा और पॉसिबिलिटी है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना. And then once that is imbibed in the values, then the actual movement starts in the form of asana. That means we are now doing yogasana to control, make our body fit, flexible and healthy. Why? Because body is a very, very important vehicle for our spiritual transformation. बॉडी नहीं रहेगी तो सोल की जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी. तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बॉडी का फिट होना, फ्लेक्सिबल होना और हेल्दी होना जरूरी है. एंड वी ऑल्सो से दैट body is the temple of the living God. So the temple has to be good, and then the living God will be continuing the journey. That means the soul will be continuing the journey. So that is the importance of asana. Posture. आसन का मतलब है posture. हम एक posture पे 1 घंटे से ज्यादा बैठ सकें, इसका हमको अपनी बॉडी को तैयार करना है. Why? Because it will help us in the subsequent stages of where the actual spirituality blossoms. After asana, we do pranayam. Pranayam is what? Pranayam is control and elongation of the prana energy in our pranamaya kosh. So all of us know that we have 5 koshas. So after the physical body, which is the annamaya kosh, we have the pranamaya kosh, which is the energy body or the vital body. So the prana energy flows through that. All our major chakras are there, and the healing, all the healing modalities that all the healers do is limited to or is confined to this energy body of pranamaya kosh. Very, very important. So the breath is actually the connection between the body and mind. तो जो प्राणा एनर्जी का सही सर्कुलेशन होता है तो प्राणमय कोश, all the chakras are activated, body and mind का coordination अच्छा होता है, and the mind and body can get healed faster. Yes, so that is about the pranayam. So we have covered the 4 steps: yam, niyam, asana and pranayam. Once we do pranayam, by focusing on the breath, we'll start living in the present. तो future और past के जो हम ऑसिलेट करते रहते हैं या वैसिलेट करते रहते हैं माइंड में, वो रुक जाता है, एंड वी स्टार्ट लिविंग अवर लाइफ इन द प्रेजेंट, विच इज व्हेन द प्रत्याहार और द 5th step comes in, when we turn our mind inwards and from the outside world we are moving inside to our inside world, and then we look at do the स्वाध्याय for our मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार. ये 4 पार्ट्स हैं जो हमारे अंतःकरण के 4 पार्ट्स हैं, उनको हम स्वाध्याय में देखते हैं, and then we move forward in our inner journey. So that is why pratyahar is important, and the very well explained that it is like a tortoise retracing all the limbs and going into the shell. तो बाहर की दुनिया से हमने अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लिया है, and we are moving inwards. So control of the senses, control of our jnanendriyas, and that will restrict our attachment to the outside world. Correct? And then in the last session, we talked about dharana. So dharana, dhyana and samadhi, which are the next 3 steps, they are in together, all the 3. In totality, all the 3 are called Sanyam. So Sanyam is dharana, dhyana, samadhi, the highest level of the spiritual growth in the Ashtang Yog. So in the 6th, 7th and 8th, we are talking of moving into the higher realm of spirituality. What is dharana? We did that in the last session. So we have to understand it this way. First, let us understand how do we exist in this universe. So I, as a jiva, I am existing, right? Then there is a world, संसार है, and then परमात्मा है. अब उसको आप जैसे मर्जी मान सकते हैं, आप उसको सगुण साकार मानिए, उसको निर्गुण मानिए, अपने अंदर मानिए, जहां मर्जी आप मान लीजिए, लेकिन परमात्मा एक ऐसी एंटिटी है और एक आत्मा है, और जो यानी कि जीवा है, और एक संसार है. So dharana is when the jiva is connecting to the divine and fulfilling all the desires, all the intentions, all your perceptions about the outside world. क्योंकि जीवा और आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या आ रहा है? संसार आ रहा है कि नहीं? और तो कुछ नहीं आ रहा.
संसार में है वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो हमको संसार की तरफ खींच लेती है एंड हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ या तो कट जाता है या फिर उतना फोकस नहीं होता है. So the only thing that is blocking us in becoming one with the divine is the world, the outside world. So in dharana, what we are doing is we are fulfilling our desires, we are manifesting our desires, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और उससे निवृत्त हो रहे हैं. That means we are enjoying the materialistic world, fulfilling our desires and then outgrowing the desire, so that in the next step when we move, there is no outside world. So in dhyan, we are talking of only two entities. धारणा में तीन थे. आत्मा है, परमात्मा है और संसार है. अब संसार को हमने बाईपास कर दिया इन द धारणा स्टेज. डिजायर्स जो थी मैनिफेस्ट कर ली एंड without getting attached to it, we are living our life powerfully. So we are moving from the stage 6 of dharana to the stage 7 of dhyan. So that is what is the focus for today. And in dhyan, there are only two entities. यहाँ पे संसार का distraction नहीं होगा. It's only between Atma and Paramatma. Yes. So this we look at as धारणा में तीन elements हैं या तीन entities हैं, जीवा, संसार और परमात्मा. ध्यान में संसार बाईपास हो गया तो जीवात्मा और परमात्मा. क्लियर? सो दैट इज ध्यान. एंड जब वो मर्ज हो जाते हैं समाधि स्टेट में, विच इज द नेक्स्ट स्टेप which we will discuss possibly in the next week, then we talk of oneness where Atma merges into the Paramatma. So there is only divine. There is no individual entity of the Atma there. तो जीवा अपने आप में कुछ नहीं रहता, वो परमात्मा में लीन हो जाता है. Get that? So that is a samadhi state. So anybody who has any lack of understanding of this, or if you have any questions, please ask. And then we move on with the details of dhyan. In this session today, we are going to talk of the journey of the soul and the divine, or the journey of soul to the divine. Yes? Anybody who wants to ask anything, share anything, please go ahead. काफी लोग नए थे इसलिए मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ रिकैप कर लिया so that everybody would be at the same page. Yes? Okay, meanwhile, let me see if anybody else has joined. Pushpa ji, namaskar. Kusum Patel ji, welcome. Bharati Gupta ji, welcome. Tarun Badwa, welcome. And Shruti, welcome. Yes. Anybody who wants to ask or anybody who wants to share? Otherwise, we are ready to move on into the discussion for dhyan. Dhyan in general is known as meditation. Yes. But actually meditation is not the correct translation, क्योंकि इंग्लिश में उतना ही क्लोज आ सकता है. But when we talk in scriptures or shastras, so dhyan has a much deeper meaning than meditation. One thing is the practice of meditation. जैसे हम क्या बोलते हैं, meditation कैसे करते हो? हाँ, मैं सुबह उठ के 1 घंटा सुबह मेडिटेट करता हूँ, 5 से 6, और एक शाम को मेडिटेट करता हूँ 6 से 7. This is actually the practice of meditation. This is not meditation. Meditation is what? To be in a meditative state 24 hours a day. हमको 24 घंटे मेडिटेशन करते रहे? No, that is not what we are saying. प्रैक्टिस आप सुबह शाम 1-1 घंटा ही करोगे या आधा घंटा करोगे, जो भी हमारी रूटीन है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करोगे. This is the practice of meditation. This is also called dhyan. But dhyan also includes the effect of that meditation in your life. That means I am in the meditative state throughout the day. And if I do that regularly, I am in that meditative state always. Possible? Yes, it is possible. Let us understand how it is possible. पहले एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो हम सब रिलेट कर पाएंगे. आपको कोई तकलीफ होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं एक गोली सुबह लेना और एक गोली सुबह 8 बजे लेना और एक गोली रात को 8 बजे लेना. उसका इफेक्ट 24 घंटे रहेगा. यानी कि एक गोली सुबह ली, 12 घंटे उसका इफेक्ट होता है, और फिर एक गोली शाम को ली, उसका इफेक्ट another 12 hours. So you are covered for 24 hours, whereas you are eating only tablets twice a day. So I'm not saying this is exactly that, but understand it this way. आप सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, उसका इम्पैक्ट रहेगा
maybe for 12 hours. रात को आप फिर दोबारा करते हो meditation, it will also have an effect of maybe 12 hours, correct? So you are covered for 24 hours. And when you do that practice regularly, what will happen? You remain in that meditative state even when you are talking, walking, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, चलते फिरते, आपका meditative state में ही है. That is also part of Dhyana. So when you say I am practicing meditation, it is not just the practice, it is the impact of that practice in your life. That is also part of meditation. That is when you will move into the state of oneness with the divine, which will be Samadhi, the next state. Correct? Now, how do we practice meditation? There are so many methods. We will talk about that. And we will also talk about what is taught by Lord Krishna in Bhagavad Gita. There is a method which is taught, so we'll talk on that. But before that, I want to ask all of you, or rather, I will open up a discussion where you can share what kind of meditation you are doing, what is the benefit that you have got, and how do you want to take it further. That will be the important thing, because I don't want this to be a theoretical session. I want this to really, really impact you, make a difference in your life, make a difference in your sadhana, and then help you transform your life. So that is the whole aspect. I mean, that is the whole purpose of this session. So let's have some sharing. कितने लोग meditate करते हैं? First, let me have a show of hands. कितने लोग meditate करते हैं? May not. जैसे मर्जी आप करते हो. So let us have some sharings. How you do the meditation? Correct? Yes. पहले कौन बोलना चाहेंगे? Lakshit Bhatia ji has raised hand. Okay, go ahead, Lakshit. So I do very on a Sahaj Marg meditation, so which is focusing your energies and then not let it go, and to set it in a kriya state of a mind in a very sukhasana. This is the kind of meditation I've been doing in the morning. Besides this, I try to do meditation while walking, while cooking, while doing my daily home chores. That's a different kind of which is said to be a like sound-based kriya. Okay. Okay. So your practice of meditation, is it a specific thing that you do in the morning and evening kind of a stuff, or is it in general that you're doing throughout the day? Yeah, so in the morning and the evening, it's a specific thing that focusing everything towards the inward by sitting in a proper posture and maintaining my back straight, my neck straight, and then sitting in a asana, and then try to keep my eyes open or closed, not ekagrachit, like do not let my mind vibrate to other things. So this is the morning and evening meditation I do. Okay. Okay. Besides this, yeah, while cooking, while doing my daily home chores, I try to do certain things. Okay. So we will leave that part. So what you're saying is morning and evening you are doing meditation by sitting in a posture, and whatever you are doing for me. What is the duration? Both the sittings, what is the duration? The morning it's like 25 minutes to half an hour, and then evening it is more like 10-15 minutes. Okay, good. And what is the kind of benefit that you have got? How long you have been doing this? कब से कर रहे हैं? Doing it, I guess, approximately more than 1 year. Okay, very good. And what is the difference it has made in your life? On your maybe clarity in my daily course. I have good decision-making abilities. Very good. I don't have fear. Anyone's fearing me. I can go ahead and argue with anyone. Then I know what is right, what is wrong. Even if other people are saying, I could stand ahead with making my observations to the point. Okay. And I don't like synchronize with any other bite. So I know whatever my daily intuition, it should be right. Okay, got it. So you have got clarity of mind. You can take your effective decisions, and you are living a very powerful life. That's what I can get from what you share. Very good, Lakshit. Let's acknowledge it, Lakshit. So now we are clear about what is the kind of practice, what is the duration, and what is the benefit. So this is how I want all of you to share, so that everybody can get a feel of what exactly is the benefit of these techniques. Correct? So who would like to go next? कौन share करना चाहेंगे? Preeti ji, would you like to share your
your experience of meditation? Well, Yes. good evening, everybody. Good evening. Like meditation, so I'm doing it from past, I guess, 8 to 9 years. But my duration पहले was a bit longer. Now it is of a very short duration. Because थोड़ा of सा my family issues, फोन my के son पास was आके not बोलिए, well. आवाज थोड़ी सी कम आ रही है प्रीति जी। हाँ, फोन के Hello? पास आके, हाँ Am I ठीक है। audible? हम्म, तो पहले तो it was 1 से 2 घंटा डेली का होता था सुबह भी, और it was 1 घंटा रात को भी. But now it is reduced to 15 to 20 minutes in the morning and 15 to 20 minutes in the evening. Due to some family issues and my health yeah, issues. But yes, I had my intuitions and all, which are very strong. I'm doing healing and everything daily. But to be honest, Bhagavad Gita changed my life when I was in class 11. I was the most notorious one, as you all know. Whoever knows me very well knows me that I was a very notorious one. But in class 11th, I took philosophy as my subject. And during that time, I realized whatever you do is only a karma which will pay you back. So from that time, my intentions and my thoughts, whatever I do is, my intentions are very clear: not to hurt anybody, not to do anything which will any initiate come from my hand. So that is my practicing way to on my spiritual journey. I perfect. like कर्म मैं कोई ऐसा नहीं करना चाहती जिसकी वजह से मेरे को कोई ऐसा गिल्ट हो या कोई मुझे बुरा लगे, कुछ नहीं. मैं Great. सब ऐसा कर्म करना चाहती हूँ कि Very good. उससे So you have it got puts on society clarity of what kind of karma you should do because of your practice of meditation. Correct? Yeah. Very good. Very good. बहुत बढ़िया. Let's acknowledge Preeti ji, and she has been very, very regular in her spiritual progress. And yes, there has been some family issues because of which she has not been able to focus of late, but then she is back now. Very good. Let's acknowledge Preeti ji. Yes. और कौन बोलना चाहेंगे? Your experience, Amit ji. Whenever you feel like you can move on. Yes, Bharati ji, कुछ कहना चाह रहे हैं? Hello, आवाज नहीं आ रही है ठीक से. I think there is some noise in our background. Okay, so whenever you are ready to share, Bharti ji, you can unmute and share. Huh? Meanwhile, I have put you on mute because there is some disturbance coming. Yes, who else would like to share your experience of meditation? कब से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या बेनिफिट है? 3 things that I want. कौन बोलना चाहेंगे? परवीन जी, अपूर्वा जी, निवेदिता जी. My co-participants in the life and breath. We talk of being a lot of expertise in the field of meditation and pranayama. So who would like to share? Amit ji, you want to share now? Go ahead. Yeah, I mean, just in case if anybody wants to share first. No, you go ahead. Otherwise I can. Yeah. So my experiences of various kinds of meditation. In fact, my exploratory journey started roughly about 10 years ago when the internet was not even open and YouTube did not have too much of content. I was searching for how to control mind, and I landed up tasting at least a dozen kind of various meditative techniques. And I was just counting some few days back. I think there were about roughly exactly 12 meditative techniques that I think that I would have tasted from. Before this session, I was just making a quick list. So, for example, breath work itself is great, miraculous meditative activity. Apart from that, I'll just name transcendental meditation from Art of Living, Soham, and various other progressive next level of meditative techniques. I also learned Sahaj Yoga from Srimati Mata Nirmala Devi ji, Kriya Yoga from Anandas and Yogadas, from Sadhguru Zisha's couple of techniques, BK Brahmakumari's, Yes. Osho's sound frequency, Reiki. I think I was perhaps very exploratory, and I still continue to experience many of these. But ultimately, by about 2022, so after having spent about 7-8 years, I found that chakra purification or chakra meditation
happened to be a very focused and exclusive way of improvising our lives. Uh, because all the meditative techniques are amazing, no doubt. They all are capable enough to bring and upgrade somebody to a level of, I can say, to a level of even God, where we can create miracles. Even, let's say, sorry, there's a background noise. So, for example, even transcendental meditation or breath work or Sahaj Yoga or Kriya Yoga, all of them are amazing and capable enough to bring Satyug in everybody's life, in the person who's doing it. Yes. But I found that chakra purification or chakra meditation, which is also known by various names like balancing, alignment, cleansing, unblocking, has the capability to address very specific areas in life. So, for example, somebody's life may have a great health, but may not have great wealth and relationships, or can have great wealth, but not have relationships and health. So ultimately, though we can talk about this later in some of the specific sessions, and I will also conduct 90-minute session on Sunday in the offline spiritual retreat. But very briefly, many of us would know here that every chakra has a very specific role to play. And there are specific techniques by which those chakras can be purified. And the energy and the prana and the chi, which travels through our energy body, energy channels, nadis, it gives a very focused result in the very focused area of life. Yes. Yeah. So my experience ultimately of 10 plus years being in the Himalayas, learned from various yogis and stuff, and also internet, tells me very humbly that chakras are the more specific tools than any other technique. So that's one experience that I found, and I'm still open, to more techniques and also exploring more specific benefits from any other technique. But let's see what life has to offer again. The other thing which if I can take a step back. So any question on whatever I just said till now, if anybody has a question about any specific technique that they have heard of, and if they have a question around chakras specifically, I'm happy to answer. Yeah. Just in case. Yeah. Yes, sir. Lakshadji, bataiye. A couple of questions I would like to ask. So, if you are talking about the blocks, could you tell me how many blocks are there in the body? Sorry, your sound was breaking. Can you repeat that? I think Talking about the blocks in the body. So, how many blocks are there, and which? No, you need to come closer to the router or Wi-Fi. No, okay, we'll handle that question later. Yes. I will handle that question later. Amit ji, aap aage boliye. हाँ. Any other question? Himanshu ji, you have a question. Yes. Okay. Good evening, everyone. Good evening. Amit bhai, my question is कि I had some connection with other spiritual guys. They are saying कि जो sound है जो YouTube पे available है, there is some deviation between हम बोलते हैं but actual में वो word specifically is not aligned with that. Is it true or false? Yeah, so not the words but the very sound. बीज मन जैसे हम कह रहे हैं. Yeah, correct. So sound and words are two different things. The sound that most of the world consumes today is not the best of the sound that we should consume. There was some revolution happened in the music industry about, I think, about 100 years ago. And as a result of which today, I think there is something, I'm not an expert on this, but what we hear usually in our life around is not the right frequency of the sound, which is aligned with our soul. So that's one thing which needs a global reform, I would say. Yeah. So does it impact a negative manner also? No, it's a very small contributor. So even if sound healing frequencies we listen to or not listen to, it may partially make us life better or not. But there are various different other tools which compensate for if we use sound frequency as a healing technique or not. So it's like हमने एक दिन में particular activity नहीं करी तो भी life बहुत अच्छी चलती रह सकती है. Sound is important, but not the decision maker. Okay, let me just add to it. See, basically, the highest vibration of this universe is Om. We all know that, right? Correct, yeah.
there is only one vibration actually, which is Om. Now, depending on the instrument, this can be, it can come out in different ways. So just to give you an example, I will not talk of humans. So when जब कोयल बोलती है तो कू निकलती है, जब कौवा बोलता है तो काव निकलता है. बेसिकली वो ओम की ही वाइब्रेशन है, पर उस इंस्ट्रूमेंट में से वही निकलेगा. So as a human being, as a seeker, we need to understand the highest vibration is Om, right? So if you are, there is no, उसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं है. तो ओम को आप जिस मर्जी तरीके से अगर आप उसको चैंट करते हैं या मानसिक जप करते हैं, तो वो आपके एवरी ह्यूमन बीइंग इज, क्योंकि कण कण में ओम की वाइब्रेशन ही है, पूरा ब्रह्मांड ओम की वाइब्रेशन पे ही टिका हुआ है. तो वो हमारे हर सेल पे, हर टिश्यू पे, हर ऑर्गन पे इम्पैक्ट करेगा, हील करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, राइट? सो बाकी जो है उसी के डिफरेंट वेरिएशंस है. नुकसान किसी से नहीं होगा, इम्पैक्ट कितना होगा डिपेंड्स ऑन योर साधना, राइट? सो दैट इज अ राइट वे टू अंडरस्टैंड. तो नुकसान कुछ नहीं होता है, बट बेनिफिट जितना होना चाहिए शायद उतना ना हो, अगर आप उसमें कोई डिस्टॉर्शन लाएंगे, करेक्ट? तो लुक एट इट दैट वे. तो गाय का जो जैसे काऊ म्याऊ वो करती है, माऊ करती है, या बिल्ली म्याऊ बोलती है, या डॉग भाऊ भाऊ बोलता है, वो सब ओम की ही डिफरेंट वाइब्रेशन है, उस इंस्ट्रूमेंट में से वही निकलेगा. ठीक है जी? So you don't have to worry on that. So depending on which vibration you are, when you chant Om, it will have an impact on you. Look at it that way. Yes. और जो बीज मंत्र हैं सारे चक्रास के, जो अमित जी बोल रहे थे, जो अपनी चक्रा मेडिटेशन में भी बताएंगे, वो बीज मंत्र स्पेसिफिकली फॉर दैट चक्रा है, and it has a very powerful impact, right? And as a spiritual healer, I've been talking of only healing of the chakras only for the last 25-30 years, correct? तो उसमें स्पिरिचुअल हीलिंग से भी आप अपने चक्रास को हील करते हैं. जो लक्षित भाई का क्वेश्चन था कि अगर चक्रास में ब्लॉक्स होते हैं तो क्या वो हील हो जाएंगे, या कैसे ब्लॉक्स आते हैं? यस, एनी हीलर हु कैन डू ऑरा फीडबैक कैन टेल यू द हेल्थ ऑफ योर चक्रास, राइट? And then accordingly we can do karmic healing or spiritual healing or chakra purification method, which chakra meditation, which Amit ji is saying. It can heal the chakras, purify it, cleanse it, and transform the energy in the chakras and transform your life in any aspect. चाहे health हो, wealth हो, relationship हो, holistic है. आपके कर्मा, past life, present life, genetic कर्मा, सारे conditioning जो हैं, सारे संस्कार आपके heal हो जाते हैं. No? So that answers Lakshit's question also. Yes, Amit ji, back to you. Yes, sir. I want to just, how could you tell me that how do you chant Om? So, like if you could give me a demo, how do you do that? Helpful ओम for के all of us. बहुत सारे YouTube में वाइब्रेशंस हैं, आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को पकड़ के ओम की चैंटिंग कर सकते हैं. चाहते हो तो मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, जब हम बात करेंगे कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, टेक्निक्स, उसमें मैं बता दूंगा. हाँ, बट लेट मी फर्स्ट go back to Amit ji. Amit ji, you can complete your sharing, and then I move on to different types of meditative techniques which we can use. Yes. Yeah. Ji, thank you. So before I go, so this is one thing which I wanted to touch upon, but once again, back to the audience, अगर कोई सवाल है किसी का कि various kinds of meditation, जो भी हमने बात करी, transcendental, क्रिया योगा, art of living का, सोहा, ब्रह्म कुमारीज and ओशोज, चक्रास, अगर का, फिर मैंने कहा कि चक्रास give a very specific solution to a specific problem. इस बारे में कोई सवाल है तो पूछिए. Otherwise, I will move to something else that I want to share. Yeah, you can go ahead. Okay, sure. Once again, this is my own understanding, and it may not have been written in any scripture. Ye straight away from my own experiences, and very intense. When I say intense, they were very fast, accelerated. तो ये समझ में आया कि ना बहुत सारे लोग when I talk to people, जैसे कि मेडिटेशन नहीं होता है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेडिटेशन आपके हिसाब से क्या है? तो बहुत ही बेसिक लेवल का, बिल्कुल प्रिमिटिव क्वेश्चन है. तो लोग कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो वो भी मेडिटेशन है जो मैं रोज करता हूँ, जैसे मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं वेजिटेबल काट रही हूँ, कर रहा हूँ, या मैं जिमिंग कर रहा हूँ, या मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, या मैं ड्राइव कर रहा हूँ, या म्यूजिक सुन रहा हूँ. तो वो लोग कहते हैं मेरे हिसाब से तो यही मेडिटेशन है. सो अल्टीमेटली we will find there are a lot of people have their own understanding of levels of meditation. एक तो होता है kind of meditation, एक हो गया levels of meditation. तो कोई फिजिकल, प्योरली फिजिकल एब्जॉर्प्शन अगर हो गया किसी का, जैसे जिमिंग, इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है.
सिर्फ जिमिंग चल रही है या स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, उनके हिसाब से वो भी मेडिटेशन है। Yes. तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडीज बिलीफ, मेरे को 4 लेवल ऑफ मेडिटेशन समझ में आता है। लेवल, अब काइंड अलग हो जाएगा उसमें। लेवल एक हो गया, एक ऐसा लेवल जिसमें बॉडी और माइंड इन्वॉल्व है, जैसे कि हमने बात करी जिमिंग या स्पोर्टिंग एक्टिविटी, या लेट्स से इवन चॉपिंग वेजिटेबल्स, कुकिंग, कोई Yes. अपना किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को जिसमें माइंड और बॉडी दोनों इन्वॉल्व है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज अ लेवल, इट इज अ मेडिटेशन, बट परहैप्स नॉट द हाईएस्ट व्हाट अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस कैन ऑफर। दूसरे चलते हैं उसके ऊपर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो कि प्राइमरीली माइंड लेवल की एक्टिविटी है, जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग अ बुक, लिसनिंग टू म्यूजिक, सिटिंग विद योर ओन सेल्फ, जिसमें बॉडी भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हम ठीक है, बॉडी है, वी एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट प्राइमरी इट इज द माइंड वर्किंग। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे लिए रीडिंग ही मेडिटेशन है। यस, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की डिबेट का कोई फायदा नहीं है, या नो किसी भी कोई अथॉरिटी या कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि यही मेडिटेशन है। और इसके नेक्स्ट लेवल एक बात समझ में आती है कि मेडिटेशन विच इज ओके, स्टेइंग बैक फॉर अ मिनट, जो एक हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? थॉट्स आए जा रहे हैं। सबका 90%, 99% लोग यही कहते हैं, मुझसे मेडिटेशन नहीं होता क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पाता या कर पाती हूँ, या थॉट से अपने आप को रिलीज नहीं कर पाता हूँ। सो यहाँ पे आई थिंक मेनी ऑफ अस विल एग्री कि इवन letting the thoughts come, watching your thoughts, focusing on those thoughts, even if most of the thoughts will be unpleasant experiences या चिंताएं होंगी, वो अच्छे थॉट्स तो कम आते हैं कि कल मैंने पार्टी करी या कल मैं पार्टी करूंगा। ये ज्यादा आता है कि कल की क्या चिंता है, या परसों किसी ने मुझसे क्या कह दिया था, या क्या हो गया था, या क्या होने वाला है। सो उस थॉट से भागना भी कोई आवश्यकता है नहीं इनिशियली। one of the best utilization of this meditative practice, जिसको मैंने भी सेकंड कैटेगरी में नाम लिया, कि जिसमें अपने साथ बैठना या म्यूजिक सुनना या रीडिंग करना, या इवन लेट्स से वॉचिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें खो गया आदमी बिल्कुल, और कोई थॉट नहीं आ रहा। सो ऐसी सिचुएशन में भी उसको भी when the thoughts are coming, it's a great opportunity to observe thoughts, focus a lot even on those thoughts, even if they're unpleasant thoughts। यहाँ पे एक थॉट आता है, एक और चीज आती है कि जिसपे देंगे ध्यान वो देगी अपना ज्ञान। Yes. सो उन थॉट्स को सोचते रहो, उससे एक सॉल्यूशन निकलने के ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं। Yes. सो हम लोग थॉट से भागने की बजाय अगर उनको देखें, मॉनिटर करें, तो जिसने ये एक्सपीरियंस किया है, और आई एम श्योर कि इस रूम में भी हम 18 लोग हैं, काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि थॉट्स के साथ बैठ जाओ, वो भी एक मेडिटेशन है और एक सॉल्यूशन निकल जाता है। या प्रीति जी, वांट टू से समथिंग राइट नाउ, प्लीज गो अहेड। ठीक है, थैंक यू शिल्पी जी फॉर एक्नॉलेजिंग, थैंक यू लक्षित भाई फॉर I've एक्नॉलेजिंग। experienced this a lot of times. Very good. Whenever Very I good, am Amit ji. Let's in some acknowledge Amit ji. problem, Yes, Preeti ji. आप कुछ कह whenever रही I हैं? have some problem, I sit down शांति से, क्योंकि मुझे पता जब मैं बैठूंगी तो वही चीजें आनी है दिमाग में, और उसका सोल्यूशन भी डेफिनेटली वहीं से ही निकलेगा। क्योंकि जब तुम पीस पे होते हो, कामली उस थॉट को ही सोच रहे होगे ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ यूनिवर्स तुम्हें साइन देगा कि इसका यही सोल्यूशन। Absolutely. Yes, Perfect. yes. बहुत क्या बढ़िया. बात, क्या Let's बात है, क्या acknowledge बात Amit ji. Very good. है। लास्ट And नाउ, if I have to summarize it, Amit ji, what I would say is, जैसे आपने कहा ना, जैसे सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलता था, he was in a different zone. Similarly, when many people are in the pursuit of their dancing or singing, they are in the zone. वो भूल जाते हैं अपने आप को भी. तो we have to understand that is also a meditation, but that is at the level of dharana, as we have already explained. If it is anything related to the world, if it is anything related to the world, जैसे मैंने बताया था, जीवा है, परमात्मा है, एंड संसार है। संसार के लिए अगर कुछ भी कर रहे हो तो धारणा के लेवल पे है। इट कैन बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, ही कैन बी कंप्लीटली लॉस्ट इन ए जोन एंड बी कंप्लीटली लॉस्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, सब कुछ हो सकता है, उसी काम में फोकस्ड है, बट वो धारणा के लेवल पे है। ध्यान के लेवल में, जो अष्टांग योग में अगर मैं वापस आता हूँ, तो अष्टांग योग में व्हाट सेज पतंजलि हैज एस्टैब्लिश्ड इज, वंस यू आर free from the attachments of the world, only then you move to the level of ध्यान। तो ध्यान जो है ये नॉर्मल मेडिटेशन से अलग है, मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में मेडिटेशन ही बोलते हैं। तो उस मेडिटेशन में आप बोल सकते हो कि जो सचिन भी बैटिंग कर रहा है तो मेडिटेटिव स्टेट में है, बट इन अष्टांग योग इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट ध्यान मीन्स द कनेक्शन बिटवीन द सोल एंड द डिवाइन।
That is the level we are talking of, because after that it moves into samadhi. तो धारणा ध्यान समाधि को उसी 3 to 1 के लेवल पे ही लेके गए हैं सेज पतंजलि, एंड दैट इज वेयर वी आर फोकसिंग ऑन. तो जो आपने बताया बिल्कुल सही है, पर उसको हम अष्टांग योग में धारणा के लेवल पे रखेंगे, राइट? एंड देन वी आर मूविंग ऑन टू ध्यान. अब ध्यान के कुछ टेक्निक्स जो हैं, आई विल क्विकली कवर दैट, एंड देन वी कैन हैव फर्दर डिस्कशन. इज दैट ओके? तो सबसे पहले ध्यान में जो भगवत गीता में बोला गया है, लॉर्ड कृष्णा हैज सेड दैट, and it is explained in a very simply in a simple shlok. Samam kaye shirogrivam dharyan achalam sthira samprekshay nasika gramsvam dishes chan bolokya. This is a shloka in Bhagavad Gita where Lord Krishna is saying that the perfect way of a yogi when he is doing the meditation is sit in a posture with back, neck and head straight. Important. उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है हमको मालूम है. बैक नेक एंड हेड स्ट्रेट रखेंगे, सारे चक्रास वर्टिकली अलाइंड होते हैं एक लाइन में, है ना. तो राइजिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कैन हैपन फास्टर. सो फर्स्ट यू आर सिटिंग इन अ पोस्चर एंड यू आर होल्डिंग दैट पोस्चर विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, without moving, without any pain, without any discomfort. You are sitting in a posture, back, neck and head straight. Eyes you can either partially close or completely close, not completely open. Completely open में the world will get it. So it is either partially closed or you can say completely closed. And then you focus on the third eye chakra, which is the center of the forehead. यहाँ पे जो center of the forehead है, which is the third eye chakra, that is where you focus on. Correct? So he says, samam kaye shirogrivam dharyan achalam sthira samprekshay nasika gramsam. Focus on the third eye chakra. Samprekshay nasika gramsam dishes chandalokan. Now don't look anywhere else. Don't look into the outside world. You are moving completely inside. क्योंकि already हम प्रत्याहार कर चुके हैं, already हम धारणा कर चुके हैं. So there will not be any distraction. The mind will be turned inwards, detached from the world, and now you are focusing yourself to move towards the divine. That is the definition of meditation which is given in the Bhagavad Gita. Correct? Now there is a lot of options after that. क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक होता है गुरु मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और ये जाप आप बोल के कर सकते हैं या मानसिक कर सकते हैं. मानसिक इज सपोज टू बी बेटर इन द मेडिटेशन, यस, बट कुछ लोग बोल के करना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो परमिसेबल. तो एक होता है मंत्र मेडिटेशन वेयर यू आर चैंटिंग द मंत्र, एंड when you are deep into the meditative state, what happens? The mantra is also lost. यानी कि मंत्र भी छूट जाता है और आप completely meditative state में चले जाते हैं. So one is the mantra meditation. One is you follow the breath. Correct? There are few things that we can do in the meditative. तो या तो आप मंत्र को follow करेंगे जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, या फिर आप अपने breath को follow करेंगे, incoming and outgoing breath, which is the process which is done by the art of living, where we do the soham meditation. So when you breathe in, so when you exhale, hum. So that is a kind of breathing and chanting of the mantra which goes on. और ये मानसिक है, अंदर होता है, तो आप ब्रीदिंग इनसाइड एंड आउटसाइड कर सकते हैं. जब आप बोल के मंत्र बोल के मेडिटेशन करते हैं, तो इट इज डन ओनली ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, बिकॉज वी कैन ओनली स्पीक और चैंट व्हेन वी आर एक्सहेलिंग. इनहेलिंग के समय हम नहीं बोल पाएंगे. तो मंत्र की चैंटिंग हमेशा एक्सहेलिंग के साथ होती है, जबकि हम मानसिक जब जप करते हैं तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग दोनों के साथ होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर पावरफुल मेडिटेशन जब हम मानसिक जाप करते हैं. करेक्ट? सो दिस इज अबाउट द मेडिटेशन. अगर गुरु मंत्र के साथ कर सकते हैं, ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो द विपासना मेडिटेशन वेयर आई हैव ऑलरेडी डन दैट फॉर इट्स अ 10 days course that the Goenkas have started and it is very very popular. उसमें शरीर के वाइब्रेशंस को देखा जाता है. तो उसमें क्या है? यू आर एब्सोल्युटली अवेक, अलर्ट, हैप्पी, पीसफुल, and you're still and you're silent and you're watching your body vibrations. तो बॉडी के वाइब्रेशन से जैसे जैसे आप उसको छोड़ते जाते हैं तो आपका चित्त जो है वो शांत होता जाता है. So that is a practice which we do in the Vipassana meditation. That is another kind of a meditation. Then we have, as Amitji said, Raj Yog meditation of Brahma Kumaris, which is also very very powerful. वो भी मैंने किया हुआ है. तो उसमें it is basically one affirmation or something you take, like I am the blessed child of God. मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ.
मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे एक छोटे छोटे एफर्मेशंस होते हैं, उसको आप चैंट करते रहते हैं, उस पर फोकस करते रहते हैं, एंड देन यू आर कंप्लीटली in the meditative state and connected with the divine. Idea is that the soul or the jiva actually में soul ही है, तो soul has to be connected with the divine. And एक बार जो कनेक्शन बन जाता है, then you in that remembrance of God. ध्यान का मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना ध्यान रखो, यानी कि रिमेंबर. तो अगर परमात्मा की याद में हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम फिर चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते हुए गाना गाते हो, मंत्र जाप चल रहा है. So that way we are connected with the divine. So that is the Sahaj Raj Yoga meditation which the Brahma Kumaris teach. Another way of doing it. So exactly the same thing. Practice के लिए सुबह और शाम आपने आधा घंटा 1 घंटा कर लिया. Throughout the day you are in the remembrance of the divine. वो गुरु मंत्र है या कुछ भी है, वो चल रहा है आपका. So that will take you to the meditative state. So these are some of the techniques that people follow. अब मंत्र अलग अलग होंगे तो गुरु मंत्र के हिसाब से वो प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा, बट आइदर इट इज मंत्रा मेडिटेशन और इट इज अ ब्रेथ वर्क. ब्रेथ को फॉलो कर रहे हो या फिर अपने बॉडी के सेंसेशंस को देखते हुए आप छोड़ रहे हो. मोस्टली दीज आर द थ्री, broadly these are the three different types of classical model of meditation. And then of course what Amitji has shared is a chakra meditation where you focus on each chakras in the sequentially you focus on the chakras from Mooladhara to the Sahasrara, and then you raise your Kundalini Shakti energy. So that is another form of meditation which can happen very, very powerfully, and it can heal all the aspects of your life. So that is what we will be looking at when we are in the spiritual retreat. So that is the experience that you will be getting. So traditional methods meditation के जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए. आपको स्पिरिचुअल रिट्रीट में एक ऐसा मेडिटेशन का प्रोसेस अमित जी बताएंगे जो बहुत ही पावरफुल है, एंड इट इज द effect will be immediately experienced immediately after the session, right? And if you do that continuously, definitely you will transform any aspect of your life. So that is the importance of the chakra healing meditation which Amit ji was mentioning, right? So now I will take some sharings and questions if you have anything. So anybody who wants to share or somebody wants to ask any question, please go ahead. Himanshu ji, you wanted to ask something, I suppose? हाँ, कुछ था आपके दिमाग में? नहीं, okay. Yes. Vivek Walya ji says, isn't empty stomach required for meditation? Yes and no. हाँ, क्योंकि आप आसन नहीं कर रहे हो, प्राणायाम नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप वज्रासन में अगर बैठ जाओगे खाने के बाद, which is actually recommended, एक ही आसन है जो खाने के बाद आप कर सकते हो, even when the stomach is full. तो आप वज्रासन में बैठ के आप आराम से भगवान को याद करो. भगवान को याद करने के लिए खाली पेट भी चलेगा, भरा पेट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बट yes, you should not do any आसन that time. You should not be doing प्राणायाम. प्राणायाम also immediately after खाने के बाद नहीं, 2 घंटे बाद कर सकते हो. Yes. तो खाली पेट होना मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं है, आसन और प्राणायाम के लिए 2 घंटे का गैप रखना जरूरी है. बेस्ट है खाने से पहले कर लो. तो वैसे हम सुबह करते हैं या रात को करते हैं, तो रात को अगर कर रहे हो तो खाने के थोड़ी देर बाद कर सकते हो आप. वज्रासन में 15 मिनट बैठ जाओ, मेडिटेशन कर लो, नो प्रॉब्लम. इवन अदरवाइज वज्रासन में नहीं भी बैठोगे तो भी आप बैठ के आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मेडिटेशन की कोई टाइमिंग नहीं है, लिमिट्स नहीं है, यू कैन डू दैट. Yes, so that's a good question. So I hope everybody has got that answer. Anybody else who has any doubts? कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? Best time ब्रह्म मुहूर्त है, no doubt about it. But in case you cannot do that at that stage, then do it anytime. Yeah. Right. Anybody else who has any question? You were telling about the demo for Om. Demo for Om. Okay. So, right. How many of you are keen to do that meditation? सुशील जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं आपको बार बार म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर रहे हो. ध्यान रखिए, अगर डिस्टर्बेंस है तो म्यूट पे रहिए. Yes. So who is keen to get a demo of Om? हाँ, yes. Okay. So obviously जो ओम अपने हिसाब से चैंटिंग होती है, so you cannot do
the Om meditation when somebody else is doing it, unless you are putting it on a record and you are trying to match that chanting. तब कर सकते हैं. तो अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, चलिए कर लेते हैं. सब लोग क्वेश्चन में आ जाइए. एंड आई होप एवरीबडी हैज is at least not having dinner right now. हाँ, सेशन के बीच में डिनर तो नहीं कर रहे ना, तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो विल हैव मे बी 2 to 3 राउंड्स ऑफ ओम चैंटिंग. ठीक है, रेस्ट इज वी कैन कंटिन्यू. तो सबसे पहले कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में. पाँव जमीन पे रहेगा अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और इफ यू आर नॉट सिटिंग इन ए पोस्चर में हो तो ठीक है, यानी कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे हो तो अलग बात है. अदरवाइज इफ यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर, then your feet should be on the ground. bare feet हो तो ज़्यादा अच्छा है. कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में रखेंगे. yes. eyes half closed. हाफ क्लोज से कोशिश कीजिए, या अभी खोल के रख लीजिए. जब एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे तो हाफ क्लोज रखना है. हाफ क्लोज क्यों बोलते हैं? पूरा क्लोज कर लिया तो नींद आ जाएगी, पूरा खोल दिया तो दुनिया अंदर घुस जाएगी. तो you need to have a secluded place where nobody disturbs you, and then you are with half closed eyes, you are looking at the tip of your nose, and then slowly relax your breathing. Complete rest. Body को अब हिलाएंगे नहीं. No movement in the body. Slow relaxed breathing. As you relax your body, your mind is getting relaxed. As your mind is getting relaxed, your body is getting more relaxed. The body is relaxed, mind is calm, and you are slowly focusing on your incoming and the outgoing breath. Inhale, exhale, inhale, exhale. Now inhale, and as you exhale, chant Om as per your capability and practice. Om. 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 Remain in the posture. Feel the vibration of Om in all your body parts, in all the cells, all the tissues, all the muscles, nerves, organs and organ system, chakras and energy system, all the 5 koshas. Feel the vibration, feel the energy flowing into your body from top of the head to the tips of the toes. Remain in this experience for some time. Complete relaxation. As you inhale, do the mind chanting of Om, So, and as you exhale, say Hum. So,
Don't say is mansik. So complete relaxation. Slowly rub your palms. Bring it on your face. And opening your eyes, you can come to normal position. Yes. So you chanted Om only 3 times. But this is the process. You do that for 5 minutes, you do that for 10 minutes, you do that for half an hour, and you see the benefit. Yes. Scientifically, it has been proven that 1 hour of meditation is as relaxing as 2 hours of sleep. So if you do 1 hour of meditation, you get to 1 hour extra in your life. 2 घंटे बचेंगे, 1 घंटा तो मेडिटेशन में लग गया, तो 1 घंटा आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. आपको 1 घंटा मिल गया, उसमें आप और बाकी काम करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, जो भी करना करिए. Get that? Yes. So who wanted that experience? How was it? So this is how you need to actually practice. ओम की चैंटिंग करने के बाद तुरंत उठ के भागना नहीं है. Let that vibration seep into every cell in your body. Remain there for some more time. और सिर्फ सोहम बोलिए उस समय. सोहम is something which is natural for when you are breathing. हमारा बेसिक ब्रीथिंग भी सोहम के वाइब्रेशन से ही चलता है. सोहम. Inhaling so, exhaling hum. That is a soham meditation. That is the art of living, but it is very, very powerful. चैंटिंग नहीं करना है, मन में जब कर रहे हो तो सोहम कर सकते हो, क्योंकि इनहेलिंग एक्सहेलिंग दोनों इन्वॉल्व है. राइट? Yes. Anybody who has anything to share or anything to ask? We are all 4 minutes over time, but it's fine. We can continue for some time. So what are you taking away from the session? Take away क्या है? अब जो मेडिटेशन आप करेंगे, किस हिसाब से करेंगे और कितना करेंगे, कितना बढ़ाने की कमिटमेंट है, look into that and see how you want to transform your life. So I will meanwhile share a particular case. It's a little funny. So one of the person who called me says, I do meditation 1 hour in the morning, 1 hour in the evening, लेकिन मेरा गुस्सा बढ़ रहा है. Okay. तो अगर आपकी मेडिटेशन ऐसी है कि आपके विकार बढ़ रहे हैं, then stop doing that kind of meditation. It is not helping you. पर हाँ, अगर 10-10 मिनट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आधा घंटा करो. 10 घंटा इज नॉट, 10 minutes is not sufficient. You need to do at least 30 minutes to bring some changes in your inner world. Yes. So we need to look at that. यानी कि यही है कि अगर 50 mg की गोली से असर नहीं हो रहा है तो 100 mg की गोली लोगे. तो उसका ड्यूरेशन बढ़ाओ. Nothing wrong with the practice of meditation. Only thing is you have to do that with more, थोड़ी सी और शिद्दत, थोड़ी सी more effort, थोड़ा सा और तप लगाओ उसमें, तो साधना अच्छे से करो तो असर आएगा. करेक्ट? यस. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? तो आपके विकार बढ़ने नहीं चाहिए, आपकी नेगेटिविटी बढ़नी नहीं चाहिए. यू शुड बी एबल टू लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज व्हेन यू आर इन मेडिटेशन, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन. The divine light, divine love, divine wisdom will come into your system. It will replace the negativity in you. Right? You're invoking the divine. When you're invoking the divine, the darkness has to go. Ignorance has to go. Clarity will come. Like Lakshit was sharing. Clarity आएगी, decision making आसान हो जाएगा. Life will be powerful. And people will see that transformation in you. So all that will happen. That is the power of Dhyana. Yes. And next week we will be talking of when you proceed further into the deeper levels of Dhyana, you will hit the Samadhi state. And how the Kundalini Shakti rises from the Mooladhara to the Sahasrara. That is part of the Samadhi discussion, which we will do. What are the different kind of Samadhi? How you can raise your Kundalini Shakti from Mooladhara to Sahasrara. Then the consciousness rising through the Shushumna Nadi. So all that we will be discussing in the next session. Yes. But right now, focus on
Dhyan. That is important. Yes. Anybody else wants to share? Can we now talk about the retreat? Yes, we are going to talk about that now. Yes. Anybody else who wants to share or ask anything? GSA Buildwell says she will start meditating from today. Arshi, right? So Arshi Yeah. says she is going to do meditation. Yes, Very good. it's very interesting. Good. It's a very interesting session. Yeah. But there are people, who do meditation. मेरे को थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाए. ये तो वही बात हो गई, आप तलवार से धागा काट रहे हो. Actual dhyan is for you connecting with the divine to reach the samadhi state. And the spiritual retreat is also a promise that nothing less than moksha. अगर आप मोक्ष की इच्छा रखते हो, मुमुक्षु हो, मोक्ष की इच्छा रखते हो, then this retreat is for you. Don't come to say मेरे को हेडेक हो रहा है, मेरे को माइग्रेन हो रहा है, वो ठीक होना है. वो बहुत छोटी चीज है, वो तलवार से धागा काटने वाली बात है. हाँ, मेरी हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरी रिलेशनशिप में थोड़ी सी कड़वाहट है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ वननेस विद द डिवाइन, वी आर टॉकिंग ऑफ द समाधि स्टेट, एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट इन द स्पिरिचुअल रिट्रीट. यस, राइट. स्वामी जी, over to you. So you can explain whatever we are planning for the retreat. And today Sandeep ji is not here because he is celebrating his wife's birthday, so they are out for celebration. So he is another person who would be conducting the session on NLP and mind success techniques. So, and myself and Amit ji. So I'll be doing the Vedanta wisdom session, and Amit ji will be doing the chakra meditation. Correct? So yes, Amit ji, over to you. Whatever you want to share about the retreat, you can do that. Thank you. I think hardly any time left. सिर्फ 1 मिनट में इतनी ही बात वैसे सर बता चुके हैं. 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे. वेदांता चक्रा प्यूरिफिकेशन, जिसको मैं मेडिटेशन नहीं बोलूंगा, चक्रा प्यूरिफिकेशन का एक थियोरी एंड डेमोन्स्ट्रेशन होगा. और साथ में इवनिंग में एनएलपी संदीप बंसल जी करेंगे. इस कॉस्ट में दिन में दिल्ली में इस तरह का कोई भी स्पिरिचुअल रिट्रीट नहीं हुआ है, बात पक्का है. इन दिस काइंड ऑफ कॉस्ट जो वेदांता का विजडम है, जो शशि जी कराएंगे, चारों वेदांतास का जो एंड है, उसका एक एसेंस जो कि अल्टीमेटली ये सिखा सकता है कि हम लोग सभी अपने अपनी लाइफ में गॉड के लेवल तक कैसे राइज करें और गॉड के लेवल से कैसे ऑपरेट करें और सभी में गॉड कैसे देखें. ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. मैंने भी शशि सर से 2 बार कोर्स किया है, इसके अलावा बाहर से भी किया है. तो ये अपने आप में लाइफ ट्रांसफॉर्मेटरी ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है. तो 3 एक्टिविटीज हैं थ्रू आउट द डे. एक ठीक ठाक सा मिनिमल सा 3 स्टार होटल है. फीस आप सब लोगों को पता है, एनर्जी एक्सचेंज. ये इसमें मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट. अगर हम दक्षिणा की बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है. वी वांटेड टू जस्ट डू दिस. जो लोग जुड़ चुके हैं हमसे, आई थिंक इस ग्रुप में करीब 60-80% लोग जानते हैं कि ये प्राइमरली फॉर द कॉज हम लोग कर रहे हैं. और कॉज हम सभी को पता है, हम सब लोगों को पता है कि कर्मा ठीक करने के लिए बेस्ट तरीका इज टू डू द ज्ञान दान, स्प्रेडिंग ऑफ स्पिरिचुअल विजडम. सो यही प्राइमरली हमारा ड्राइवर है. एंड ये हमारी पहली इस तरह का इनिशिएटिव है. इससे पहले लास्ट मंथ हमने ऋषिकेश में किया था, जो भी वंस अगेन सिमिलर कॉम्बिनेशन था इन द हिमालयाज. ये दिल्ली में एफर्ट है, एट मच लेसर कॉस्ट टू मेक इट मोर एक्सेसिबल फॉर पीपल इन दिल्ली. अगली बार हम जूम पे भी कनेक्ट करेंगे सो दैट इवन पीपल हु आर आउटसाइड दिल्ली कैन आल्सो कनेक्ट. फिलहाल के लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि अगर अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए. अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी और को बताइए. साथ में कोई सवाल है तो पूछिए. That's pretty much. Great, wonderful. Let's acknowledge Amit ji. Thank you. And some wisdom bite, so that you have some food for thought. Imagine, visualize your life which is free from all suffering and miseries. Visualize a life where you are fulfilling your desires and you are free from all the attachments of the desire.
Visualize a life where you are absolutely fearless. So freedom. Moksha is nothing but freedom, right? So you have the freedom to experience your desires and be completely free. You have the freedom to be completely fearless. You're free from all the fears, free from all the desires, correct? And free from all suffering and misery. Imagine that kind of a life. ये possibility है जो आपको spiritual retreat से जब आप वापस आओगे, you will be having the seeds. You will have the seeds sown in you where you will be able to experience this freedom. That is my promise. Yes. So I think that is good enough motivation and inspiration for all of you to spread the word, register into the program, and join us on Sunday. Yes. All right. Big round of applause for everybody who participated today. And I hope this session was valuable to all of you. Look forward to seeing most of you in the session who are in Delhi NCR in the session. Yes. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great week. And we meet on Sunday at the event and then again on the next Wednesday. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy, take care, good night, God bless. Thank you, bye-bye.